सबको सिलेबस मिल गया ना? यस मैम मिल गया। यस मैम। संडे का कोई डाउट नहीं है ना उसमें? नहीं मैम, मैम कौन सा सिलेबस? एसएस का। संडे एग्जाम का। Dear, I will send you. ठीक है। संडे एग्जाम का। अच्छा अमीषा मैम। यस मैम। मैम आप अच्छा खाली मिल गया। रिजल्ट शीट खाली भेज दीजिएगा सबका एक पेज पे लिख के, बाकी सबका पीडीएफ तो मैं आज बच्चों को भेज दूंगी ग्रुप में जो आपने मुझे शेयर कर दिया है। रिजल्ट शीट? एक रिजल्ट, हाँ एक रिजल्ट शीट जैसा पेज पे बना के मैंने आपको बताया था ना। हाँ ठीक है। ठीक है ना, बाकी बच्चों को पीडीएफ आज मिल जाएगा शाम तक। ठीक है। Okay, am I audible, beta? Yes ma'am. Fine. We have started the reproduction in plants, right? So we'll continue with that today. We discussed that except. And when you will give marks? Yes, beta. तो बात हुई। Ma'am is going to share that mark with you. Okay, all the marks with you. Don't worry. Fine. Okay. Ma'am, can you? Sorry. Ma'am, can you see me? Yes, No. I can. Ma'am. Yes, No. beta. What happened? What happened, Teeth? Nothing. Just give me a moment. Ma'am, can you just this number? Ma'am, I am not able to hear your voice. Asexual reproduction and sexual reproduction, two types we are going to study, right? And what exactly we are going to see in this chapter? Types of reproduction, their examples, seed dispersal, and real life application. Real life application in terms of what? How we can learn the real life application, how it's related to us. Okay, for us, it's like what we are getting from them, right? This is that whole map, mind map of this chapter. If you want to prepare same, you can, it's easiest thing, right? Suppose you are going to put one that I will explain later on. Directly we'll jump into that main topic. We have started an introduction, right? Do you have any doubt what we are going to study? No, ma'am. No ma'am. Start with asexual reproduction and sexual reproduction once again. Okay, ma'am. I was not able to understand asexual reproduction. Yes, but that's what we are going to see. We haven't started yet, okay? We haven't started yet, so don't worry. We need to. Hello happy friends, welcome to new happy learning video. Plants, like all living Don't things, worry. need to Everything I'm going reproduce share to once again. Fine, if right now you are not able to see this or screen is blurred, it is just because it's right now uploading, okay? And Canva will take a little bit time, so don't worry. I'm going to repeat that once again with another video also. perpetuate their species to survive through time. Today, we're going to get to know plants' asexual reproduction. In asexual plant reproduction, flowers don't intervene. There's no need for a gamete or female and male cell. Okay, there will be no fusion of a male and female gamete cells. Okay, they are not going to fuse, and that process is known as asexual reproduction. From any vegetative part. Vegetative part means consider, we already discussed, Vida. Consider that we are having, suppose,
We are having aloe vera plant, right? If we are going to cut that aloe vera leaf and we'll start planting it somewhere else, it can grow once again in another plant. Yes, just like Yes, your money ma'am. plant also, right? There you'll not find out any seeds. To develop your money plant, you don't need any kind of seed, right? If you are going to cut that money plant, right, and will start growing it, or you are going to plant it in another pot, definitely it's going to start developing. So there you will not require any flower, right? Now you know that what is that reproductive part of any plant or trees? That is flower, right? Flower and fruit is what? It's a ripened ovary. We will understand what is ovary. Okay, that's a reproductive part. Fruit and flowers are related to reproduction, okay, or reproductive parts. Fine. So we can do that. There will not require any seed. And that type of reproduction is known as asexual reproduction. In asexual reproduction, there's only one parent. So the new plants will be genetically identical to this. So there will be involvement of only new parent, one parent. One parent means what? Suppose I am having one. I'm growing one money way, okay, or money plant. So if I'm growing this money plant right now, it's growing very well, but I want to grow it in my another balcony also. So what I'll do, I'm going to cut it from this particular node, right? You know that what is node? From that leaf will start growing, and internode means it will be in between those stems. I'm going to cut it here, and then I'm going to put it in another pot, right? So that is known as what? There you'll find out this is your parental part. This is your one parent. Means out of only one parent, we are growing that new plant, right? So only involvement of one parent will be there. So if it's if you are going to see that there is only one parent available, okay, or one parent is going to take part, then that newborn baby, generally we are saying that in case of human body, right? Same thing, newly growing plant will be exactly like its parent, right? Here it's not parents. In our case, we can say we are either like our mother or father, right? But here it's only one parent. So that newborn plant is just like that single parent, right? And this is all about asexual reproduction. New plants can originate from a single cell, tissue, an organ, or a part of a mother plant. Okay, here we can see these examples. These examples where we can see this onion, potato, some of the roots. Okay, there we can see if we are going to see. I think you already learned that what are climbers, creepers, shrubs, herbs, right? And you know that what are different food food paths. Food paths means what? You will see that turmeric. What do you think turmeric is? Fruit or flower? It is root. It's Or root. roots? What is it? Roots. It's a suppose it's a root. It's a root or stem, beta. You know that, no? At least which one is stem, which one is root, which one is fruit, Yes, ma'am. right? I don't need to repeat that, right? So if any of that part will start developing, suppose this stem will get converted into one food part that we are getting, right? So how we can do that? That's what we'll see. There are two types of asexual reproduction: vegetative reproduction and reproduction without seeds. Two types of asexual reproduction: vegetative reproduction. Vegetative means any vegetative part, okay, part of that plant will start developing into new plant. And reproduction without seeds, like we are discussing for asexual reproduction. Let's get to know them. If you want to get to know vegetative reproduction, what root vegetables, bulbs, stolons and rhizomes are, if you want to learn how plants without seeds reproduce, what mosses and ferns are, if you want... There are varieties of examples that we will study in asexual reproduction. Okay, exactly. If seeds are not there, then exactly what we are going to, how we are going to get our new plants. That is our main point. Asexual reproduction.
By the end of this topic, you will be able to describe different types of asexual reproduction. Asexual reproduction is a form of reproduction that involves the production of a new organism by a single parent. Fish. Is that clear? Single parent is going to involve to give that birth to organism. Okay. Here you Yes, will see ma'am. that this one is related to what? Asexual reproduction is related to here fission in organisms. It's not in plant, but why we are learning them? Because those are single cell structure. Okay, that's why we are learning. Fission means what? You will see that division of parent cell. Means suppose consider we are having one amoeba, right? This amoeba is going to divide. Suppose we are having this amoeba. This amoeba will divide into two parts, and that separated part will act as a newborn amoeba. Okay, so it's separating from parental part only. So that is known as fission. Fission and fusion is different. Fusion means we are going to join something. Fission means we are going to separate something, right? And it will divide into two parts. So this type of reproduction we are going to see in case of what? Amoeba and paramecium. Those are single cell structure. Fission refers to the division of parent cells into two parts. This is the simplest type of reproduction and is seen in single-celled organisms such as amoeba and paramecium. In amoeba, the nucleus first divides into two equal parts. It's something like you are having a dough. Okay, you are having pizza dough. It's of this size. If you are going to just separate this dough, you know that we are going to just separate it, right? We are going to prepare two dough out of it, and then we are going to just roll it. So two pizzas we can prepare, right? It's something like that only, that this parental amoeba will just get separated. Means it's not only cell is going to divide, but nucleus will also divide, and that newly formed cell will act as a newborn amoeba, and that is known as fission. This is followed by the division of the cytoplasm. Thus, the two daughter amoeba formed grows and attain full size and then split Further, again. that amoeba will develop and grow. Okay, it's also already consisting of the cytoplasm and all the required materials like amoeba is consisting of. In some organisms, such as Spirogyra and flatworm, the organism breaks up into two or more fragments after maturation. These fragments grow into new individuals. These are the examples of asparagus. That is one example of algae. How they are going to divide or form new asparagus? If we are going to break, suppose I am having that length, suppose I'm having that longest stick. I'm going to break it down into two. So both of them will act as a two new daughter asparagus. Daughter means what? It's not in terms of gender. It's in terms of what? Daughter means it's a newborn asparagus. Okay. Just right now you need to understand this only. In budding, one or more new organisms grow in the form of a bulb-like projection. Just give me a moment. Ma'am, I have doubt. Yes, Vida, what's your doubt? Ma'am, can you repeat what is the meaning of fusion? Meaning of Fusion. fission. Yes, fission is something like if you are having a dough, the dough, if you are going to divide into two parts, so both of those two parts are known as what? Daughter means newly born organism, nothing else. Fine. It's easy to understand, Vida. Okay. Ma'am, because my network was falling. I got it. Fusion is completely different from fission. So please make sure that you are not going to get confused. Ma'am, I am not able to understand fusion. Sorry? Ma'am, I am not able to understand it now also. Okay.
Now we'll see that in case of The tiny spherical wonderful example right now, you will see that because it's monsoon season, okay, our surrounding area is consisting of that moisture, right? This moisture means what? Water is Yes, present. ma'am. And just because of that, you will see if you're having any food particles left, okay, or leftover food, within a few days or few hours is going to catch that fungi, right? They're fungi, fug. Why? Because all the spores are hanging there in the air only. And that spore, if they are going to land over your surface of the food, then it will start utilizing it and will start developing. Okay, that is about fungi. So exactly how fungi is developing and growing, or new fungi will develop from that parent. So exactly how, so spores, fungal spores, you will see this sometimes on our skin, we are getting that infection, fungal infection. What is that? The dad or kujli. Okay, you might have heard that in an advertisement, right? So what is that? Fungal infection. How we are getting that fungal infection? Because all those spores are already there in the air. If you are not very good at that hygienic condition, then you might get that infection, right? So these spores are responsible for transferring from air to food or skin or any other surfaces. cellular body covered with a thick wall. It grows into a new plant when conditions are favorable. Bread mold, that can often be seen growing on moist, stale bread, grows when spores settle on the bread. In the regeneration mode of reproduction, an entire new organism can grow from some pieces or cells of the parent organism. One type of worm. If you are going to, if that flatworm will divide into two, okay, something like you are having A4 size of paper, and if you are going to tear that paper will divide into two portions. These two portions are new flatworms. Okay, these two portions are now new born flatworms. That's it. So you can see that varieties of techniques are there, methods are there in nature, exactly how different living organisms are giving that new born, right? Newborn organism of them. A flatworm can be cut into many pieces, and each piece will grow into a complete new flatworm. Vegetative reproduction refers to the production of new plants from parts of the mother plant, such as roots, stems, or leaves, without help of any reproductive organ. Without any reproductive Potato. organ. There are several It will not buds require any reproductive parts. Here you can see in case of potato, right? We already have seen this potato eyes. This potato eyes, if you are going to start growing, then it's going to present on the surface of a potato called eye. A piece of potato with at least one eye on its surface is planted in the soil to develop a new plant. Ginger. In ginger, new plants are produced by some parts of underground stems. Okay, ginger is a stem, it's not a root. Okay, so if you are going to just plant it directly inside the soil, it's going to grow into the ginger plant. Onion. In onion, new plants are produced from the bulb, which is an underground stem with thick Onion is leaves. also one type of stem, it's not a root. Okay, if you are going to cut that half, and you are going to start planting that back portion, okay, that base portion of that onion, then it's going to get converted into onion plant. So what exactly we are studying right now? That without any seeds or reproductive cells and parts, we can develop a whole new plant. How? From where? So vegetative parts. What are vegetative parts? Roots, stems, leaves. And what are reproductive parts? Flowers and fruits, right? So we are growing it from vegetative parts. And that's why it's known as vegetative propagation. Strawberry. In plants like strawberry, the shoots with the buds bend towards moist land and grows into a new plant. Okay, isn't it amazing? It's going to directly, naturally, it's on. It's not going to, we don't need to intervene there. Okay, it's going to start developing from that bud. Bud means what? That unopened flower. Bryophyllum. Bryophyllum is wonderful example of that asexual reproduction, specifically vegetative propagation. Because here you can see those leaves,
again those leaves are consisting of on its ridge. Ridge means uski kinare pe, right? Those ridges are consisting of what, beta? Small, small leaves. These leaves will further grow that whole bryophyllum plant. वो नीचे गिर जाएंगे और उसमें से पूरा नया plant बनेगा. Plant of Yes, Bryophyllum ma'am. reproduce with the help of its leaves. A Bryophyllum leaf contains various buds on its margin. When these buds fall on moist soil, they give If rise all to the new conditions plants. are favorable, then they are going to grow into a new plant. Several artificial methods are Okay, developed that for was about vegetative reproduction. natural method of reproduction in case of plants, and that was one part asexual reproduction, out of which first we have seen that is vegetative propagation. Now we will see few of those artificial technique. Artificial means man-made. We are going to intervene in their sexual reproduction, asexual reproduction. Okay, so what exactly we can do? You might have seen those who are doing gardening, right? They are going to cut that one part of a rose plant, and then they are going to put them inside the pot, and it will start developing one more rose plant. Or else what we can do, we will see here. First technique, Production, which are commonly used to grow many plants from one plant. This is referred to as artificial propagation. Some of these methods include grafting, cutting, layering, and tissue culture. In grafting, a twig of one plant called scion is kept over the cut stem of another plant called the stalk. okay. Now exactly in this technique, what we are going to do is, first of all, we'll take, suppose consider we are having one example of any plant. We are going to cut it. On that cutted part, we are going to stick another part of that second plant. Okay. So this is our host. Suppose Tirth is going to give us that party, or he is going to just call us for celebration. So he is the host, and we are going to go there as a guest, right? So this is their host plant. It's known as, we are going to give that name stalk, on which we are going to put another stem of another plant, and that is known as scion. Okay. Now this plant will start developing here as a whole new plant. We will see that, just a second. Then they are tied up together. So directly they cannot tie. So we are going to tie them artificially with the help of sellotape or threads. Okay, we are going to tie them up. Then Tissue of the scion and stalk combine to form a new plant. This method helps in developing a high-yielding and disease-resistant species of plants. In cutting, a healthy young branch or stem of scion is kept over the cut stem of another plant called the stalk. Then they are tied up together. Grafting, so this process is known as grafting. Grafting means what? We are going to put one, we are already having one plant. We are going to put one more there. Okay, we are layering that another plant. So that's why it's known as graft. To graft means what? Generally grafting word used when it is skin. Okay, we are going to replace that bond skin with another skin. Okay, so it's grafting. We are putting that another skin layer on that bond skin. Okay, it is not very much common, but I'm giving this example so you will understand. Grafting means already one part is there. We are going to graft another part, okay, of any plant, and that is known as grafting. That is first method of artificial reproduction. Okay, this plant will now grow, and this plant, why we are doing this? Consider one of the plant, rose plant. Okay, it's suffering from so many diseases. Okay, but their flowers are still, we can consider it's good if we are going to do something. Means it's something like we are having doctors, we are having animal doctors also. For same thing will apply for plants also. Okay, we are not doctors, but we can do that. We can take two very good qualities of plants and we can combine them so that a newborn plant, okay, that new daughter plant will be very good and healthy. All the characteristics will be it will be of very good quality, right? Twig of one plant called scion is kept over the cut stem of another plant called the stalk. Then they are tied up together. The tissue of the scion and stalk combine to form a new plant. This method helps in developing a high-yielding and disease-resistant species of plants. More yield will get.
In Okay, suppose cutting, rose plant. a healthy Now this is cutting. What we are going to do in cutting, just see that healthy carefully. young branch or stem of the plant having buds is cut off and planted in moist soil. Okay, any branch we are going to where you can see the bud. Bud is the place from where new plant will generally grow, right? So we are going to cut it from that bud and then we are going to plant it under that soil. The cutting develops roots and So grows first it into will a new develop roots plant. and then shoots. Shoots means what? Smaller size of leaves, and further it will develop. In layering, a young healthy branch is bent down towards the ground and covered with moist soil. After some time, roots develop from the covered part. Third type is layering. Layering means we are preparing layers. How we are preparing layers? That branch directly we are planting inside that soil. And from that branch, it starts developing into a new plant. Okay. This is called a layer. This branch can now be cut to form a new plant. In tissue culture, a Last piece part of is tissue important. Tissue culture. First of all, we need to understand what is tissue culture. Tissue means a group of cell, right? What is cell? Basic fundamental unit. You know that better, right? Cell is basic fundamental unit. To construct our any of that organ system will require cell. Similarly, it's not only one cell. It's a group of cell, right? Suppose group of cell is performing digestion, group of cell is performing nervous system, group of cell is performing our circulatory system. Similarly, in plants also we are going to see cells and tissues. Tissue means group of cell. Okay, India is a team. We are using that word only India, but Indian cricket team is consisting of what? At least 12 players, right? It's not only about one player, right? So same thing here, group of cells they are going to perform, and that group of cell is known as tissue. In biology, we are not going to use the same word that we are using in general or real life or physics and chemistry. So we are using that simply what? Tissue. So we are going to remove one tissue from that plant and we'll start developing it inside a laboratory. And that's why it's known as tissue culture. Culture means what? It's not a traditional culture, you know? Indian culture, American culture, or Western culture. No, we are not talking about a traditional culture. We're talking about culture means we are going to remove one tissue from that plant and we are going to grow and develop those cells more in number, okay, inside laboratory. So that is known as tissue culture. We are developing the tissue further into a plant. Is cut off from the growing tip of plants and kept in the nutrient medium under controlled conditions. The hormones Control means inside laboratory we are going to do that. All the factors are controlled. Now, light we are going to control, water we are going to control, nutrients we are going to control. But if you see outside in farms, okay, all the environmental factors, outer environmental factors we cannot control. It's not in our hand. Whether it's rain, moisture, humidity, dryness, right, nutrients, fertility, soil, or yes, beta, are you getting it? Or sunlight. Okay, but here it's a controlled environment, and we can say that that's why we are saying tissue culture. Inside laboratory, present in the nutrient medium helps in the cell division. It leads to development of roots and shoots. These plantlets are then grown in the moist soil. Okay, once they will start developing smaller size of shoot. Shoot means what? Smaller size of leaves, right? And roots. Then after that, we are going to transfer it to the main field, and then they will develop. Vegetative reproduction is very useful as it allows developing new plants very quickly. Exact copies of the parent plant are produced. Okay. Plants propagated with this method need less attention in their early stages of growth. What are those advantages of asexual reproduction or vegetative propagation specifically? So it will not take that much time. The sexual reproduction will take that much time. Now suppose a wonderful example is that preparation of mango on a tree, mango tree. It will take time, right? And in all the season, it's not going to do that, right? So that ripening of or the preparation of mango on mango tree, it's nothing but that reproductive part, okay? Part or that process, okay? So it will take time, but vegetative propagation will not take time. You will see their varieties means exact copy of that parent, it's there, it's going to form, right? Third thing we will see. And
new variety of plants can Here, be in this developed. case, we can see that new recombination. Recombination means we are going to decide what it's going to produce new. Okay, it was about asexual reproduction. Ma'am, I am having doubt. Yes, beta. Ma'am, I also have doubt. हाँ हाँ बोलो बोलो मैम आगे बोलो. मैम इसमें जो ग्राफ्टिंग बोला तो मैम ग्राफ्टिंग इसलिए नहीं होती कि जो फ्रूट प्लांट 5 इयर्स में प्रोड्यूस करता है वो 1 ईयर में कर दे. हाँ, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है. देखो, अगर मैं बोलूं सिंपल एग्जांपल कि जो टोमेटो है, ठीक है, अगर टोमेटो जनरली जो पहले जो टोमेटो आते थे, राइट, वो बहुत जल्दी पक जाते थे और खराब हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन में ही खराब हो जाते थे. तो हमने क्या किया, जो जीन थे यानी जो डीएनए की वजह से, ठीक है, अभी के लिए डीएनए रखो, जिसकी वजह से वो पक जाता था, हमने वही निकाल दिया. फिर जो पोटैटो थे, ठीक है, या फिर पर्पल कैबेज है, या फिर आप देखोगे कि ड्रैगन फ्रूट, ये एक ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट. ओके, ग्रेप फ्रूट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्रूट्स. फिर हमने बीटी ब्रिंजल यानी ऐसे ब्रिंजल्स जो कॉम्बिनेशन, यानी ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हमारे सामने है, हाइब्रिड वर्जन है. वो हाइब्रिड यानी क्या, नेचुरल नहीं है. पहले नेचुरल हुआ करते थे, ठीक है, सीधा वो ग्रो करते थे अपने जो भी सीड्स या वेजिटेटिव पार्ट्स है उससे. बट हमने क्या किया, जो कुदरत अपना काम कर रही थी उसके अंदर हमने अपना हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया, इंटरवेंट करना स्टार्ट कर दिया. डू थिंक सो इज द गुड आइडिया? हाँ, कि उसकी क्वालिटी, अगर एक प्लांट अच्छे से क्वांटिटी में अगर रोज नहीं दे रहा है, तो क्या हमें ये सारी टेक्निक्स आजमानी चाहिए जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट दैट मोर नंबर ऑफ रोजेस? कभी नहीं करना चाहिए, बट वी आर डूइंग इट. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी आर परचेसिंग फ्रॉम मार्केट, इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म. हाइब्रिड, और वो इतने सारे पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स और हार्मफुल केमिकल से वो पूरा कवर्ड होता है कि ये जो इतने डिसीजेस हम देख रहे हैं ना, वेराइटीज ऑफ लिस्ट, है ना, या जो कैंसर हो रहे हैं सबसे ज्यादा, पहले कैंसर नाम का कोई वर्ड नहीं था, है ना, अभी ये सारी चीजें कॉमन है. क्यों? बिकॉज बहुत जल्दी में हमें चीजें चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए. तो उसके लिए हमने तरीके तो ढूंढ ले हैं, पर वो तरीके कैसे, एट द एंड हमें ही उसकी एडवर्स इफेक्ट को टॉलरेट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, राइट. तो आपने जो बोला ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग वाली टेक्निक बेटा, उसके अंदर आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इवन आप चाहो तो उसके अंदर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हो. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसके जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है. तो आपने जो बोला, इवन उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबी, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में कौन से आईज का कलर होगा ना, वहां तक हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप सोच लो कि प्लांट में तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेंज कर सकते हैं, है ना, इतने में समझ लो. बट डू यू थिंक सो कि ये गुड आइडिया है? वो पूरी ब्रांच जो इसमें लगी है, दैट इज जेनेटिक्स. ओके, जेनेटिक्स, जेनेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू जीन एंड जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड योर डीएनए. फाइन, मतलब पूरे हमारे बॉडी का जो नक्शा, पूरा चिट्ठा जिसके पास पड़ा है वो कौन है? डीएनए, जीन्स. ओके, हाँ तीर्थन, दिया बोलो बेटा अपना क्वेश्चन बोलो. मैंने तो बोल दिया. ओके दिया. मैम वेजिटेटिव बर्ड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डिफरेंट होता है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम 1 मिनट. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या? मैम वेजिटेटिव बर्ड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डिफरेंट होता है? वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन लिख दे. ये जितने भी एग्जांपल अभी स्टडी किए ना, उतने ही है. विल कम बैक टू दैट पॉइंट आल्सो, डोंट वरी. फाइन दिया, अब समझ में आया? यस मैम. ओके, विल कंटिन्यू वंस अगेन. मैम जो मोस्ट ऑफ तमिलनाडु और कनाडा में, या उन दोनों, केरला में या तमिलनाडु में, पता नहीं कौन सी जगह है, पर मैम वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पोटैटोज होते हैं ना, वो सारे है ना, मतलब उसको जो ग्रो किए जाते हैं सारे मेडिसिन से ही किए जाते हैं. हाँ सही है. आप देखो मार्केट में अभी जितने भी बनानास अवेलेबल है ना, वो सारे बनानास क्या है पता है? वो केमिकली उसको पूरा मैच्योर किया गया है, यानी उसको राइपन किया गया है. एंड डू यू थिंक सो कि वो केमिकल्स अंदर नहीं जाएंगे या फिर हमें इफेक्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली वो कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपना काम कर रहे हैं, है ना. इसलिए लोग ज्यादा क्यों ऑर्गेनिक. मैम बिकॉज हर फ्रूट का एक सीजन होता है.
हर फ्रूट का एक सीजन भी होता है और हर फ्रूट में हर सीजन में अभी तो ऐसा है कि हर फ्रूट्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने वो यस मैम, तकनीक लाइक तो निकाली है। ठंडी में हमको एप्पल्स नहीं मिलते थे पहले, और अभी एप्पल्स भी मिलते हैं। मैम बीच में Definitely. मैम बीच में वो लीची का निकला था कि लीची खाने से है ना सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ग्रो करने में बहुत मेडिसिन डाली थी अंदर, इसलिए। करेक्ट, ठीक है, तो आप ये समझते हो, ये अच्छी बात है। नाउ विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली, टू अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्लावर, राइट? व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्लावर? Because flower is the reproductive part of plant from where new plant is going to generate. But first of all, this flower will get generated or develop into what? Seeds, and that seed we are going to plant, and that will develop into the new plant. We will see that first. मैम अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा? Till now, आ रही है बेटा, बोलो, क्वेश्चन है। मैम मैं ऐसा बोल रही थी, वेजिटेटिव बर्ड्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से डिफरेंट होता है? वेजिटेटिव बर्ड, आपने बर्ड बोला? यस मैम। हाँ, बर्ड बेटा, बर्ड का मतलब क्या है? सिंपली बर्ड यानी फ्लावर कभी भी ओपन अप होने से पहले वो पूरा ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है ना, यानी आप क्या बोलते हो उसको, कि वो भी ओपन नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कली, ठीक है? देन इट्स गोइंग टू ओपन अप, वो मेच्योर्ड फॉर्म है। अगर अभी हम बोले आपको, तो आप टीनेजर हो, अभी आप फुल्ली मेच्योर नहीं हो, धीरे धीरे जाके उस स्टेज में पहुंचोगे, राइट? वैसे ही पूरा फ्लावर ओपन अप होने से पहले वो पूरा एक बर्ड के फॉर्म में होता है, तो वो एक बर्ड है। हाँ, दो टाइप्स के बर्ड हो गए, एक तो फ्लावर का भी बर्ड होगा, ओके। सेकंड बर्ड लीव का भी हो सकता है, लीव्स भी पहले ऐसे ही होते हैं, फिर वो जाके ओपन अप, ये हर केस में नहीं होगा, बट बर्ड का वो मीनिंग होता है, ठीक है? यस मैम। we have discussed and learnt the different types of asexual reproduction in plants. But is there any other method of reproduction adopted by plants? Yes, there is. We know that some plants are capable of sexual reproduction as well. Do plants possess any special features for this? Yes, they do. Plants possess flowers. Flowers are the reproductive structure of the plant. In a flower, the male I'm sex... going to tell that which one is the kitchen of that plant, so you will tell that leaves, right? Or which one is that who is going to absorb or supply that water, so you are going to say that roots, right? Who is going to give that mechanical support, so you will tell that stems, right? Similarly, who is going to develop a new plant, so we are going to say that reproductive part is flower. So flower is consisting of, we already seen that in case of hibiscus flower, is consisting of a male and a female cells, okay? Here we are going to see that a male cell is known as stamen and pistil is known as a female cell, or organ is called the stamen and the female sex organ is called the pistil. But how does this process of sexual reproduction occur? Let's try and understand it. But before that, let's have a look at the typical structure of a flower. It appears somewhat like this. A flower has mainly two components. Now, what do we mean by this? Every flower is mainly composed of two parts. They are the essential and the non-essential parts. Okay, now this is important. Do we know flower is consisting of essential and non-essential parts? We already discussed that which one is sepal and which one is petal. So petal is that patti of that flower. Okay, suppose consider this is our rose plant. So you know that gulab ki patti, okay, that is known as what rose petals are. These are the petals, and this green version who is going to give that support, okay, so that your flower can just be arranged inside that walls. Walls यानी जो पूरा उसके आजू बाजू में है, उसके फलते हैं, ठीक है? So what is that? Sepal. This is our sepal and this is our petal, right? It's consisting of this middle portion. This middle portion is what? That is a female reproductive cell, and this portion is a male reproductive cell. Okay, this male reproductive cell start passing on that yellow color. What is that? Pollen grain. That pollen grain will pass on through this channel and will mix up with the female cell and will form first cell fusion. Okay, after that fusion of a male and a female, or we can say parental cell, is going to make a first cell, and that is known as zygote. We'll see that whole process. Essential part means during reproduction is going to be helpful. Non-essential means during reproduction it's not going to involve. Suppose digestion हो रहा है, तो digestion के केस में अभी हार्ट कुछ नहीं करेगा, आपकी आंखें कुछ करने नहीं आएगी. So those are
आईज आर नॉन एसेंशियल पार्ट इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, बट वहां पे एसेंशियल पार्ट कौन सा है, आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, वो एसेंशियल है, डाइजेशन कर रहे हो, और अगर ये नहीं होगा तो हम बात ही नहीं कर सकते उसके बिना, है ना। वैसे अगर रिप्रोडक्शन की बात चल रही है तो वहां पे एसेंशियल पार्ट कौन कौन से है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, एंड what are those, pistil and stamen. Know what these are? The parts of a flower, such as the stamen and the pistil, which are the reproductive parts, are the essential parts. Their function says it all. These are essential because they are directly involved in the process of reproduction. Do we mean that if these structures are not present, then a plant will not be able to reproduce? Yes, that's absolutely correct. So how will the plant be able to reproduce if the gamete-producing structures are not present? And what are the other parts then? Floral parts such as the petals and sepals are the next in our list, and they are the non-essential parts of a flower. उनका उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, that's why they are non-essential. These floral parts do not take part in the process of reproduction directly and are therefore called the non-essential parts. Now let's discuss each part in detail. To begin with, we have the stamen, which is the male part. What does the stamen look like? If we zoom in the structure, it looks like this. Stamen has head two distinct and parts, stalk. the Okay, anther or we and can the say filament. Anther and filament. Do you think that these structures have specific functions to perform? It's something Yes, like as a if matter- we are having matchstick. अगर matchstick है तो उसका एक head होगा और नीचे उसका एक stalk होगा, तो यहाँ पे हम matchstick वाला word तो use नहीं कर सकते, इसलिए हमने बायोलॉजी में नया नाम दे दिया, anther, filament. Matter of fact, they do. The part called the anther bears minute round bodies called This pollen anther is grains, which consisting play of pollen an grains. active role in Pollen grains reproduction. means it's going to transfer these cells inside the female reproductive cells. There is a specific process by which pollen grains are transferred from the anther to the female part of the same or different flower. Now, what is that part called? For that, we need to focus onto our next floral part, the pistil, which is the female part. The pistil has three distinct subparts. And what are these subparts? They are the stigma, style, and the ovary. Okay, three parts are stigma, upper layer, okay, then style, it's a narrow tube-like channel, so that pollen grain will sit here first of all, then will pass on through this channel into directly ovary. Ovary is the part or female reproductive part where these cells from that male reproductive part will fuse and will form first cell. In higher standard, you will study exactly how it's going to develop, okay, but it's going to develop at the end of what? Whatever we are eating in form of fruits, वो फ्रूट एक्चुअल में है क्या, मेच्योर्ड ओवरी है, यानी जो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो राइपन होके फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि जैसे कि एप्पल का एग्जांपल, तो एप्पल है जो मेच्योर्ड पार्ट है, मेच्योर्ड पार्ट ऑफ व्हाट, एप्पल ट्री का मेच्योर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो मेच्योर हो चुका है और अंदर सीड्स डेवलप कर चुका है, राइट। अगर ये सीड्स हमने खाने के बाद, ये एप्पल खाने के बाद, एप्पल यानी राइपन, पकी हुई ओवरी, राइट, इन नॉर्मल टर्म। Why I'm repeating that in Hindi? Because normally ये words एकदम से आपके लिए नए हैं, right? So you are going to just, I think it may be complicated for you what we are discussing, है ना। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा था, whatever we are eating in form of fruits, they are ripened ovary, it's a female reproductive part of that plant or tree, right? तो वो ripened ovary है, वो खाने के बाद फिर अंदर से जो seeds निकलते हैं वो हम फेंक देते हैं, वहां से we can generate that same plant once again, right? So तीन part is stigma, style and ovary. Do these structures have specific functions? Yes, they do. The part called stigma is the landing place for the pollen. And what exactly do we mean by this? Pollen from the male part, the anther, land on the stigma and germinate further. This process is what we call pollination in plants. Next comes the style, which is a slender stalk that holds up the stigma in position and connects it with the ovary. What about the ovary then? It is the swollen basal part of the pistil which contains the ovules. Okay, what are ovules? What are Ovules are nothing but it's present inside ovary, है ना? Suppose if you see example of peas. Peas means what? Mutton. So that pod of peas, you will see those mutton, right, are arranged something like here. एक साइड पे वो पूरे अरेंज होते हैं, राइट। तो ये जो मटर है वो ओव्यूल्स है, एक्चुअली क्या है वो
ओव्यूल्स है, ये वाले ओव्यूल्स जो अंदर ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, राइट? सो दोज आर ओव्यूल्स, ओवरी एंड ओव्यूल्स. Are ovules, and what is their function? Ovules are the female gametes that get fertilized and form the embryo. Is this process really so simple? Well, it's not as simple as it seems. The process is quite complicated. This was just an overview. Let us get into more details of the process of fertilization in the next video. Okay, these ovules are going to get generated into what? Converted into what? Embryo. Embryo. Embryo is the first part or portion or development of what? That new seeds, है ना? यहाँ पे सीधा नया प्लांट जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे पहले सीड्स बनेंगे. अगर वो सीड को जाके आप ग्रो कर रहे हो, है ना, इसलिए हमने सबसे पहले डिवाइड कर दिया था. किस चीज को डिवाइड कर लिया था? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल. ये वाला जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यानी वहां पे दोनों पेरेंट्स यानी फीमेल एंड मेल, ओके, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होके फ्यूज होके एक पहला सेल बनाएंगे एंड दैट इज जाइगोट. ओके, पहला सेल फ्यूजन के बाद यहाँ पे वो होगा एम्ब्रियो एंड देन सीड्स. एम्ब्रियो मीन्स दैट फर्स्ट पार्ट और डेवलपमेंट, ओके, ऑफ दैट सीड. जब वो सीड बन जाएगा, अगर आप जब चाहो तब उसको प्लांट करो, वहां से नया प्लांट बन सकता है. बट उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं सीड में से प्लांट में कन्वर्ट होने के, है ना, कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर उसको आप सारे सप्लाई, पानी या फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें अगर आप दोगे तो वो अच्छे से उसमें से जर्मिनेट होना चाहिए, है ना. इसीलिए जो हम मूंग बीन्स या जो भी स्प्राउट्स बनाते हैं उसमें से टेल जो बाहर आती है वो क्या है? व्हाट इज द टेल? रूट्स है, शूट्स है, ठीक है. वो धीरे धीरे डेवलप होगा, वैसे ही फेंग्रिक में होता है मेथी, राइट. सो दिस थिंग्स आर वंडरफुल एग्जांपल्स कि सीड्स कैसे डेवलप होते हैं छोटे से प्लांट्स के. उसको प्लांटलेट बोला जाता है. फिर वो प्लांटलेट धीरे धीरे बड़े होते हैं, राइट. सो इसलिए क्योंकि वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दोनों पेरेंट्स, दोनों पेरेंट. हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए वो एग्जैक्टली उसी एक पेरेंट की तरह दिखता है, राइट. तो यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और फिर सीड बनता है. फिर सीड अगर हम प्लांट करेंगे तो वो डेवलप होगा वो सेम प्लांट, इसलिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, राइट. ये एक चीज समझ में आ गई बेटा? यस मैम. बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग सा भी है, राइट. बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में हम वैसे भी थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ेंगे, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है. फाइन. एक बार फिर से ये वाला देख लेते हैं, हमारे पास और थोड़े से मिनट्स है तो ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ये पॉलिनेशन हमने जो पढ़ा कि जो मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर, ओके, और अनदर फ्लावर, सो दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. यानी अगर हमने यहाँ से कोई चीज कुरियर रेडी तो कर दिया, अगर हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचाना हो तो हमें किसी कुरियर बॉय को या डिलीवरी पर्सन को देना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां से वहां ट्रांसफर होगा, ठीक है. तो ये जो ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए पॉलिनेशन. सिंपल, नाम वैसा ही रखा है, ठीक है. पहले पॉलिनेशन देख लेते हैं, लास्ट में फिर से एक बार. By now, we know how sexual reproduction in plants takes place. This is what we've learned. The flower, which is the reproductive organ of the plant, bears the male and the female parts. The male part, the stamen, contains the male gamete, while the female part, the pistil, has the female gamete. Fusion of the two gives rise to an embryo. Now let's get to know how exactly the process occurs. Let's learn about it in detail. But before that, tell me one thing. Do all flowers always possess both the floral parts together? Some of them do. What do we call the types of flowers which possess both the male and the female floral parts together? Okay. Flowers which that contain flower, both if it's stamen and consisting pistil of- together are called. If any flower is consisting of male and female part both in a same flower, okay, stamen and pistil. Stamen is male part and pistil is the female part. If it's consisting of in a same flower, called bisexual flowers. it's known as what? Can you name a few Bisexual examples flower, of such right? types? It's consisting of both of the sex. Sex in the sense here it's a male and female part both in a same flower. So it's a bisexual. Okay. Unisexual means only one type, whether it's a male or it's female. Okay. That part is available inside that in that plant. So that is known as unisexual flower. Rose,
China rose are a few in this category. Roses and China roses, these are the examples of bisexual flowers. It's consisting of both. In a single flower, you'll find out male part also and female part also. What about other flowers then? Don't they contain both the male and the female floral parts together? Some flowers, such as those of gourd and pumpkin, possess either stamen or pistil. That is the reason why such flowers are called unisex. Pumpkin, okay, it's wonderful example to understand. Pumpkin is consisting of, they are having separate flowers. Okay, separate flowers for what? One is for male and one is that female, right? So it's one is consisting of stamen and one is consisting of pistil. Sexual flowers. Now getting back to Uni the means one, bi means two. Okay, two of those sexes are available in same flower, so that's why it's known as bisexual. And if it's present only one, then it's known as unisexual. process, the first step is that of pollination. It is the process by which pollen grains are transferred to the female reproductive organs of a plant. Okay, it's In just a other words, transfer. pollen from the anther are transferred to the stigma. Does this process occur only between two flowers of the same type? Yes, that is correct. Pollination occurs between the flowers belonging to the same type. And does that mean pollination occurs only between two flowers born on the same plant? Okay, so now we will see the types. It may be possible in the same plant with different flowers. Suppose here we can see this is same plant. Okay, but one branch is consisting of one flower and second branch is consisting of second flower. So if they are going to do this pollination in plants, that plant is same, but flowers are different. Okay, so we will see that type That is known as question what? leads us to the types of pollination. The type in which pollination occurs between Cross-pollination flowers and born on the same plant pollination. is called as self-pollination. Okay, because same So plant what will- is consisting of two flowers and it's pollinating. This is a male flower and this is a female flower. Okay, but those both of those flowers are different, but on a same plant. So that's why it's known as self-pollinating. Self means plant is pollinating, it's transferring pollination in the same plant only. Okay, means flowers are different, but on a same plant. If this plant is going to transfer pollen, suppose this is our male flower and we are having another plant here present nearby area. Okay, this is another plant and it's consisting of one female flower, right? So this is first plant and this is our second plant. So this male plant is going to transfer pollen grain. So this is from first plant to second. So it's known as cross pollination. Okay, cross pollination between two different plants. If it's in the same plant, then it's known as self pollination. खुद से pollinate कर रहा है वो plant. Fine. Will the next type Yes, be? ma'am. The other type of pollination is called cross-pollination, where the pollens travel from the anther to the stigma of a different flower on another plant. Can you guess how this process of transfer of pollen grains occurs? For Okay, this, there are exactly, but who several is going to agents. transfer? You haven't seen that they are having hands, है ना? They are not having hands or any locomotory organs. So how they are transferring? Wonderful example is what? Air, which aid water, the process. birds, bees. Agents such as wind and water Human are the beings. abiotic ones. On the other hand, Abiotic means biotic environmental factors. अगर हवा बह रही है तो उसके साथ बह के वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे या पानी से जाएंगे या फिर किसी बी से, यानी नेचुरल एजेंट है तो उसको एबायोटिक एजेंट बोलेंगे. एबायोटिक यानी क्या? कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है. एब्सेंस ऑफ बायोटिक, बायोटिक यानी ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ पे. कौन है यहाँ पे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में. pollinators such as bees, bats, moths, and birds Abiotic यानी also living help in the organism. process. Right, small The bees, process of moths, pollination birds. makes sure that the pollen grain safely lands on the stigma. But what happens next? Does this lead to fertilization directly? Or are there any intermediate steps? We will answer. Okay, so once it will just fuse with that female reproductive part, now further what will happen? That is our question, right? Okay, we are, I'm just stopping this here because we need to stop and end our meeting. We'll continue next session, Beta. Okay? Yes, ma'am. All your questions I'll take, Beta. Mitwa, I'm making you a host. Please Okay. Ma'am, hand can it you hear over my once voice? time is there. Yes, Beta. Yes, ma'am, I was ill and I was resting at my home. That's why, ma'am, I was not able to open my video, ma'am. Beta, your voice is not clear. Hush, will you do that? What is that question? You having any question or? No, ma'am, I'm not having any question. I was get ill and I have
cough and cold. That's why Okay. I was resting. That's why I was not able to open my video, ma'am. Okay, fine, beta, fine. Okay, all of you will see that in next session. Okay, bye, beta. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. दिया का रिकॉर्ड बेटा क्या बोला अभी मैंने दक्ष? ये जो 4 डॉट्स की है उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. ओके मैम. मैम इसमें 5 एक्सरसाइज है मैम. चैप्टर नंबर 6 निकालो. हाँ लेकिन Yes. छोटा चैप्टर है. मैम पेज नंबर 113. मैम 1 मिनट में बुक भूल गया. चैप्टर नंबर 6. अब म्यूट हो जाओ. किसको कुछ भी डाउट हो ना वो हैंड रेज करे बिना कोई कुछ बोलेगा नहीं. ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सबसे पहले तो ट्रायंगल कितने साइड्स का बना होता है. ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे. तो ट्रायंगल में होते हैं साइड्स, वर्टाइसेस, एंगल्स. ये तीन चीजें होती है एक ट्रायंगल में. तो साइड्स क्या होते हैं. साइड्स होती है 3 साइड्स, ए बी, बी सी एंड ए सी. लाइन सेगमेंट्स में होता है ये ए बी, बी सी, सी. ये हुई साइड्स. ठीक है बेटा. ये लिखना है नहीं लिखना है तुम्हारे ऊपर है. वर्टाइसेस यानी कि ये जो नाम है जो अल्फाबेट्स है वो होते हैं वर्टाइसेस. वर्टाइसेस का मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं. और वर्टाइसेस उसका प्लूरल फॉर्म है. एक से ज्यादा होते हैं तो वर्टाइसेस बोला जाता है उसको. तो वर्टाइसेस के होते हैं 3, ए बी सी. ओके. तो अब ये चीज ध्यान रखना. साइड्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट्स होते हैं और वर्टाइसेस पॉइंट होते हैं. पॉइंट 2 लाइन सेगमेंट का मीट हो वो पॉइंट. 2 लाइन सेगमेंट का मीट हो वो पॉइंट. एंड एंगल्स इज ये 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो बनता है जिसका सिंबल है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ओके. मैम 2 मिनट्स मैम मैं लिख लेता हूँ. लिख लो सब लोग. मैम 1 मिनट. मैम वी हैव टू राइट दिस. हाँ लिख लो. मैम ट्यूशन सब ऑफलाइन कब होंगे. मैम वर्टिकल्स मतलब जहाँ 2 लाइन मीट कर रही हो. मैम 1 लाइन मीट कर रही हो.
Completed? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार वर्टिकल फिर से समझाओ ना। वर्टिकल को तो समझाया ही नहीं है बेटा हमको। मैम मतलब वर्टेक्स। यस मैम वर्टेक्स। दो लाइन सेगमेंट जब मीट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ओके मैम। तो वर्टेक्स बोलते हैं। नाउ इसके सब अलग अलग जो ट्राइंगल के ये पार्ट्स थे, साइड्स, वर्टाइसेस एंड ओके। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अब मीडियन तो इधर देखो बाद में लिखना मीडियन ऑफ ट्राइंगल एज मीडियन सजेस्ट। मीडियन मतलब मिडल, मीडियन का मतलब होता है जो एकदम बीच में हो, सेंटर में हो। ओके, तो मैं कोई भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स यानी ये पॉइंट से, इधर से अगर एक ऐसा लाइन बनाऊं जो एग्जैक्टली बीच में से ही कट हो तो उसको बोलते हैं मीडियन। ए से डी हुआ मीडियन। कहाँ पे कट होना चाहिए? एग्जैक्टली मिडल में ही कट होना चाहिए। पी क्यू आर। अभी मैं पी से एक लाइन बनाऊं जो क्यू आर को, जैसे क्यू आर 10 सेंटीमीटर तो उसका मिडल पॉइंट 5 पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे। तो पी से ये ज्वाइन किया एंगल से तो पीएम हुआ मीडियन। इसको बोलते हैं मीडियन। सिर्फ पी से नहीं, कहीं से क्यू से भी बन सकता है। जैसे पी आर 20 है तो मिडल हुआ 10 ये क्यू एन हुआ मीडियन क्योंकि वो एकदम मिडल में लाइन होती है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है? मिड पॉइंट मतलब पी से एन और एन से आर सेम। अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 10, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। मैम ट्रायंगल हैज 3 मीडियन आएगा ना? ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। तीनों वर्टेक्स है। ये पी से भी बनाया, क्यू से भी बन सकता है, आर से भी बन सकता है। ठीक है, तो हर ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं और उसमें लिखो, पहले ड्रॉ कर लो फिर लिखो डेफिनेशन। मैम ये दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, लिखो डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट joining the midpoint, middle point. मैम लाइन सेगमेंट के बाद क्या है? Line segment joining the midpoint. Line segment joining the midpoint to its opposite vertex, to its opposite vertex, to its opposite vertex. के बाद क्या बोले आप? To its opposite vertex is called median of triangle. Is called median of the triangle. मैम ये दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। मैम हाँ कर दो ना ड्रॉ बेटा, दोनों कर दो। ओके मैम।
मैम डन। डन मैम। नो मैम 1 मिनट। डन मैम। मैम दूसरा वाला ट्रायंगल मत रफ करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड के ब्रैकेट में हाइट लिखो। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। Altitudes of triangle. कोई भी ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। नाउ मेक श्योर ये मिड पॉइंट हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं, ठीक है। ये मिड पॉइंट पे ही कट किया हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। देखो अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ से अगर मैं हाइट बनाऊं उसकी स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, स्ट्रेट, ये होगी उसकी हाइट। दिस इज कॉल्ड हाइट, जो 90 डिग्री होती है, ठीक है। और अगर इसी का मीडियन बनाना होगा तो y और z पे बनाना है, तो y और z का मिड पॉइंट में यहाँ पे होगा, y और z का कहीं पे मिड पॉइंट इधर होगा। तो अगर x और p को ज्वाइन करो तो ये मीडियन हुआ, x और p मीडियन हुआ। क्यों? क्योंकि वो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मिडिल में आ रहा है। हाइट हमेशा मिडिल में नहीं होती, तो ये खास ध्यान रखना है। हाइट और मीडियन में कंफ्यूजन नहीं। हाइट कभी भी मिडिल में ऐसा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हाइट बीच में ही आए, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट केस, फिर देखो सेकंड केस, उसमें ऐसा ट्रायंगल है तो उसमें हाइट बीच में ही आ जाती है। थर्ड केस, ऐसा भी एक केस होगा जिसमें हाइट ट्रायंगल के भी बाहर निकल जाती है, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज। दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल सबको पता है? यस मैम। यस मैम। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90। तो अगर मुझे यहाँ ए से हाइट बनानी है तो हाइट के लिए मैंने क्या बताया? हाइट मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट नीचे आने का। कोई भी चीज की हाइट मतलब जो पॉइंट पे खड़े हो वो पॉइंट से सीधा नीचे आओ, तो वो होती है हाइट। तो ये पॉइंट से हाइट बनानी है, सीधा नीचे आए तो इधर आए हम तो नीचे। ये देखो तो हाइट जो है, इसको नोट करो, हाइट जो है ट्रायंगल के भी बाहर, ट्रायंगल ये है और हाइट ट्रायंगल के बाहर है। हाइट जो है वो ट्रायंगल के भी बाहर है। ऐसा मीडियन के साथ नहीं होता, ऐसा मीडियन में नहीं होता। मीडियन में कैसा होता है? बी और सी का मिड पॉइंट, ये रहा एम, बी और सी का मिड पॉइंट है, ए से एम को ज्वाइन कर दो, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन स्ट्रेट नहीं होता। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट जहां पे भी होगा वो वहां पे सीधी लाइन ज्वाइन हो जाएगी। और हाइट मतलब जो भी पॉइंट है उससे स्ट्रेट नीचे आके 90 डिग्री होते हैं, कभी वो 90 डिग्री। स्ट्रेट इज ऑलवेज 90 डिग्री। Straight means always 90 degree. मैम मैम हाँ, मैम आपने जो ये फर्स्ट केस किया है वो पता नहीं चला मुझे। कौन सा फर्स्ट केस? मैम आपने ये यहाँ से स्ट्रेट निकली ना, हाइट मतलब कि क्या होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। बस तो मैम हाइट फाइंड करके फिर हमें उसके मिड पॉइंट में ज्वाइन कर देना है उसको। जिया बेटा कुछ फाइंड नहीं करना है इधर, ऐसा मैंने अभी कुछ सिखाया नहीं तुमको। तुम फाइंड का मत सोचो कि फाइंड क्या करना है। तुम पहले तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हाइट और मीडियन क्या होता है।
हाइट होता है जो वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट ही नीचे आए, चाहे वो ट्रायंगल के बाहर हो, चाहे वो ट्रायंगल के अंदर हो, चाहे वो ट्रायंगल के ऊपर भी होता है। अभी मैं बताऊंगी जिसमें साइड ही हो जाएगी। तो तुम्हें वो नहीं देखना है कि तुम्हें ये नहीं देखना कि वो कहाँ है, हाइट स्ट्रेट नीचे आ जाना है, दैट इज हाइट। और मीडियन मतलब कि उसी वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट में जब ज्वाइन करोगे तो ही मीडियन बनता है। मीडियन के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि वो मिड पॉइंट पे ही होना चाहिए, और हाइट की कंपलसरी कंडीशन है कि वो 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तुमको ये मत देखो अभी के फाइंड करना, फाइंड वाला जब आएगा तो मैं बताऊंगी, पर पहले तुमको डिफरेंस समझना है। हाइट और मीडियन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हाइट इज 90 डिग्री, मीडियन इज मिड पॉइंट। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम यस मैं हाइट का नहीं बता रही थी, मैं ऐसा बता रही थी कि जब हम 90 डिग्री कर दे तो जिससे 90 डिग्री किया है उसको हमें मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। नहीं करना है ना, क्यों करना है? यहाँ किया है ऐसा मैंने, 90 डिग्री बन गया ना। तो हम एक्स से पी को ज्वाइन किया है ना आपने। बेटा तुम सुन रहे हो मैंने क्या किया? वो मैं तुमको बता रही थी, एक ही ट्रायंगल में हाइट और मीडियन बनाकर दिखाया मैंने तुमको कि ये हाइट है, और अगर मीडियन किसी ट्रायंगल का बोले मीडियन बनाओ तो मीडियन का होगा y और z का जहाँ पे मिड पॉइंट होगा वो उसका मीडियन होगा। ओके मैम। ये हाइट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो मैं तुमको बता रही हूँ। बोथ आर डिफरेंट थिंग, हाइट अलग और मीडियन अलग होता है। यस रोनित। मैम अगर 90 डिग्री से कम हो तो हाइट नहीं होगी ना मैम? नहीं, 90 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। और मैम आपने कहा कि ऊपर भी हो सकती है, तो मैम नीचे भी हो सकती है हाइट ऊपर ट्रायंगल के? मतलब कि ऐसा नहीं, ऊपर का मतलब है कि ट्रायंगल की साइड ही उसकी हाइट होगी, अलग से नहीं बनेगी। सबको राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है? आइसोसेलेस, यस मैम। राइट एंगल यस ट्रायंगल। मैम, टू साइड्स इक्वल, वन अनइक्वल साइड्स। नो, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, एक्यूट 90 से लेस। राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90, मतलब तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं ना उनकी हाइट यही होती है, ए बी ही उसकी साइड है और ए बी ही उसकी हाइट भी है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ही होती है हाइट। यहाँ से तुम नहीं बना सकते हाइट। देखो यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए से नीचे आओगे तो यही तो आओगे नीचे, और कहाँ जाओगे? सो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल, बेटा तुमको पता है कि नहीं पता है? एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मैम पता है। यस मैम पता है। यस पता है ना? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी हाइट जो होती है वो साइड ही होती है, यही उसकी हाइट है, ए बी ही उसकी हाइट है। तुमको अलग से हाइट नहीं बनानी पड़ती, जैसे बाकी में तुमको अलग से हाइट दिखानी पड़ती है। राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको अलग से हाइट नहीं मिलती, साइड ही उसकी हाइट होती है। उसकी जो साइड है ट्रायंगल की वही उसकी हाइट है। ठीक? यस मैम। मैम जो हाइट है वो हमें ऊपर जो सबसे टॉप पॉइंट है नहीं। जिसमें जो ए है उसी से ही फाइंड करनी है। नहीं, नो, हाइट कहीं से भी बन सकती है, यहाँ से भी बना सकते हैं। ये बी है, बी से भी स्ट्रेट लिख लो, सी है, सी से स्ट्रेट लिख लो, कहीं पे जो भी वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से स्ट्रेट सामने जाओगे तो हाइट हो जाएगी। मैम तो सेम हाइट नहीं होगी ना उसकी? नहीं, हाइट तो अलग अलग होगी। हाँ, हाइट अलग होगी। अभी मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ऐसा ट्रायंगल बनाओ, यहाँ से P से स्ट्रेट इधर आ रहा है, Q से स्ट्रेट इधर जा रहा है, R से स्ट्रेट इधर आ रहा है। हाइट तो सबकी अलग अलग बन सकती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
ओके मैम। बोलो मित्रा। मैम मतलब आपने कहा था ना कि जो हाइट होती है वो नीचे से ऊपर से नीचे ड्रॉप होती है, तो मैम मतलब हाइट मोस्ट ऑफ तो ऊपर के पॉइंट्स वर्टेक्स में ही होगी ना? ऐसा कंपल्सरी नहीं है ना, मैंने बताया तो सही बेटा, तुम कहीं से भी हाइट बना सकते हो, कोई भी पॉइंट से हाइट बना सकते हो। मैम मतलब हाइट को भी वर्टेक्स से सीधा लेके तो वो हाइट बन जाएगी ऐसे ना? हाँ, वर्टेक्स से सीधा लोगे तो हाइट बन जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम मुझे डाउट है कि आपने बोला कि तीनों हम तीन वर्टेक्स हो गए तो हम तीनों के वर्टेक्स से हाइट मेजर कर सकते हैं, तो हमें तीनों के वर्टेक्स से हाइट मेजर करनी है एग्जाम में? नहीं नहीं, तुम एक ही बनाओगे तो भी चलेगा। ओके। यस दिया। मैम आपने कहा कि हम तीनों साइड से हाइट बना सकते, तो उन सबका मेजर तीनों वर्टेक्स से हाइट बना सकते हैं। हाँ मैम, तो उन सबका मेजर 90 डिग्री होगा? हाँ, हाइट ऑलवेज 90, मेजर मतलब एंगल बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, साइड का नहीं। हाइट तो अलग अलग हो सकती है, बट ये एंगल, ये जो है ना, ये एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तुम कभी भी बेटा जब तुम खड़े होते हो, सब लोग अभी खड़े हो जाओ, सब लोग ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, एवरीबॉडी स्टैंड अप, ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, अपने फ्लोर पे खड़े हो जाओ। तो जब तुम खड़े हो तो तुम साइड बन गए हो, नीचे वाला बेस है तुम्हारा और उसका फ्लोर का एंगल 90 डिग्री है, तुम्हारा और फ्लोर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, हम स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ये फ्लोर, एंड यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, राइट। तो यू आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द फ्लोर, तुम 90 डिग्री एंगल बना रहे हो फ्लोर के साथ। हम कभी ऐसे खड़े, कोई ऐसे खड़े रह सकता है? मेरे को बताओ, ऐसे खड़े रह के, टेढ़ा खड़े रह के बताओ कोई, इज इट पॉसिबल? हम खड़े रह सकते हैं टेढ़े? मैम वो तो माइकल जैक्सन You always make 90 degree angle with the floor, okay? चलो नेक्स्ट इज उसी के नीचे देखो थिंक डिस्कस एंड राइट जो दिया है पेज नंबर 115 पे। अच्छा, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन लिखो। The height is given by मुझे ज्वाइन कर लो ना अंदर। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ। The height is given by line segment. The height is given by line segment यस मैम। starting from a vertex. मैम क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? Starting from a vertex. ओके मैम। Starting from a vertex. मैम आपकी आवाज गूंज रही है। मैम इन सब का नेट सही नहीं चल रहा, आपकी आवाज एकदम। Starting from a vertex. यस मैम। The height is given by a line segment starting from a vertex coming straight down to starting from the vertex, coming straight down
डाउन के बाद कुछ बोला? 2. Coming straight down to opposite side. Coming straight down to opposite side. ऊपर से opposite मतलब जो सामने है उसके, अब ऊपर से सीधा नीचे आना. Opposite side. Which is perpendicular मैम परटेंडी की परपेंडिकुलर is perpendicular which is perpendicular to the side. Perpendicular to the side. मैम डन. Take out exercise 6.1. Exercise 6.1 निकालो. मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है. अरे 6. No, ma'am, your voice is clear only. Your voice is very clear. Yes, ma'am. 7.1 ना? चलो 6.1 exercise open. मैम 7. In 6.1 हाँ. in triangle PQR diagram बना दो पहले सब लोग. Make that diagram जो बाजू में दिया है सब लोग. Yes, ma'am. मैम फर्स्ट वाला. मैम डन. डन. अब Ma'am, D is midpoint. D क्या है? Midpoint है. D is midpoint. तो अब बताओ PM क्या होगा? What is PM? P से M क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? altitude. 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 PM is altitude. PD is P से D क्या होगा? Median. मीडियन. मीडियन क्योंकि वो मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है. मीडियन इज QM इक्वल्स टू MR. No. QM और MR इक्वल होंगे. QM मतलब ये, MR मतलब ये. नो. No. नो. QD एंड DR इक्वल होंगे. यस, Q से D और D से R इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है. Q से D और D से R इक्वल होगा क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है. कोई भी लाइन का मिड पॉइंट P Q R. मिड पॉइंट मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, हाफ ये भी 10. दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से ये होता है. ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ड्रॉ रफ स्केच बनाओ. चलो खुद फर्स्ट वाला डायग्राम बनाओ. एक ट्रायंगल बनाओ ABC और BE मीडियन मतलब तुमको B से बनाना है. मीडियन कहाँ से बनाना है? B पॉइंट से बनाओ.
मैम डन। मैम फिर से बोलो ना क्या करना है। बेटा डायग्राम बनाओ, एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ। मेक अ ट्रायंगल एबीसी। मैम डन। मैम डन। मैम दिखाऊं? एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, ए बी सी, मैम और बी से मीडियम बनाना है। मैम डन। दोनों दोनों मैम डन। एक और बड़ी होगी, ये वो एक और। ट्रायंगल एबीसी और बीई, यानी कि बी से मीडियम बनाना है। तो एसी के बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ऐसे बनाने का। मैम आपने जहाँ पे ए लिखा है ना, मैंने वहाँ पे बी लिखा है। नहीं, आपने बोलती थी ना दोनों की, या वहां पे एक। नाउ बीई इज द मीडियम। मैम मैंने ऐसे किया है। हाँ चलेगा चलेगा। मैम मैंने आपने जहाँ ए लिखा है ना उसकी जगह बी लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रायंगल कैसे भी रोटेट हो सकता है। बी यहाँ लिखा है तो भी चलेगा, बी यहाँ लिखा है तो भी चलेगा। ओके मैम। नेक्स्ट, triangle PQR, PQ and PR are altitudes of the triangle. दो altitudes। पहले बनाओ triangle PQR। PQ and PR are altitudes of triangle. PQ and PR altitude दो, P point से ही दोनों, PQ भी हाइट होनी चाहिए और PR भी हाइट होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब एंगल P 90 डिग्री हो बेटा, मतलब ऐसा बनाओ ट्रायंगल। ये P, तो देखो PQ हाइट, उसकी साइड ही उसकी हाइट है, वहीं से ही पता चल जाना चाहिए। देखो ट्रायंगल PQR बोला है और PQ को ही हाइट बोला है, मतलब उसकी साइड उसकी हाइट होनी चाहिए। तो वो किसमें होता है? उसकी साइड उसकी हाइट कब होती है? सिर्फ राइट ट्रायंगल में, ऐसा दिस एंड दिस, और ये जॉइंट दोनों ही हाइट होती है, ये भी हाइट ये भी हाइट। इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये हाइट, और ऐसा कर दूं तो ये हाइट। यस मैम। सो PQ PR दोनों हाइट है, दोनों ही, ये भी 90 डिग्री ये भी 90। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपने भी सेकेंड वन में दो ट्रायंगल ड्रॉ किए है, तो पहले वाला ड्रॉ करेंगे तो चलेगा? ओके मैम मैंने गलती से दोनों ड्रॉ कर दिए। ये वाला डायग्राम ड्रॉ। See, triangle XYZ, triangle XYZ, YL is altitude in the exterior of the triangle. Exterior का मतलब होता है बाहर,
इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर बन रही है, तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में होता है। बताया था ना मैंने बेटा? यस मैम। यस मैम। उसका एल्टीट्यूड बाहर होता है। हाँ, तो y कहाँ पे, y l, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहाँ पे y लिखो, ये y, फिर बाकी दोनों जो दिया है वो लिखो। जब y से स्ट्रेट बनो, देखो बाहर आएगा। ये हो गया, इसको ड्रॉ करें। ये ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं इंटीरियर। ये ट्रायंगल है, ये इंटीरियर है, और ट्रायंगल के बाहर बन रही है उसकी हाइट। मैम डन। मैम डन। मैम डन मैम। ओके, अब बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, वो बाद में करेंगे, जब मैं तुमको आइसोसेलेस ट्रायंगल समझाऊंगी तब करेंगे। नाउ next topic will be exterior angle of triangle. Okay? एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर। ये तीन तो एंगल होते ही है, एक दो तीन जो अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर बोलते हैं इंटीरियर, ट्रायंगल के बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ये सब होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल के बाहर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, यहाँ पे सपोज, पहले ये बनाने का करने का सब बाद में करना, पहले अंडरस्टैंड करो। ये ऐसा दिया है 30, 50, 100 और बोला है ये फाइंड करो, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर opposite angle। इसका मतलब एक्सटीरियर जो एंगल होता है, कहीं पे भी हो, इधर हो या इधर हो, कहीं पे भी हो, जो इंटीरियर भी तीन होता है, एक्सटीरियर भी तीन ही होता है, वो होता है सम, मतलब एडिशन। किसका? एक्स के बाजू में कौन सा एंगल है? 100। 100। उसको छोड़ के, वो नहीं, उसको छोड़ के जो बाकी के दोनों, उसके सामने जो बाकी के दोनों एंगल्स है उनका सम होता है। मतलब 30 30 + 50 डिग्री इज इक्वल टू 80। 80 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट वर्ड ज्योमेट्री में बेटा अपोजिट बहुत यूज होगा। ज्योमेट्री में अपोजिट का मतलब होता है सामने, जो भी चीज सामने होती है उसको बोलते हैं अपोजिट। मेरे अपोजिट यू पीपल आते हैं, तुम्हारे अपोजिट मैं खड़ी हूँ, मेरे अपोजिट यू आते हैं। सो अपोजिट का मतलब सामने, तो इसके सामने ये दो एंगल्स, उनका सम। ठीक है, ये लिख दो। मैम आपने एक्सटीरियर एंगल ऑफ के बाद क्या लिखा है? ट्रायंगल। ओके मैम।
Done, ma'am. Check out exercise Done, ma'am. 6.2. No, ma'am. 1 minute. अपनी पेंसिल लो और टेक्स्ट बुक में ही करो क्वेश्चन नंबर 1. मैम 2 मिनट Put in text book only और मैं आंसर पूछूंगी. 2 मिनट साइड में थोड़ा हो. क्वेश्चन नंबर 1 करो टेक्स्ट बुक में. मैम कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखो x की सब में. ओके मैम. हैंड्स डाउन कर दो, आंसर सब एक साथ ही बोल देना. मुझे क्वेश्चन भी है. चलो फर्स्ट का बोलो आंसर. x equals to 120 degree. 70 plus 50. Correct. Second, x equals to 110. 110 degree. x. Third, x equals to 70 degree. 70. 30 plus 40. Fourth, x equals to 120 degree. 60 plus 60. Fifth, x equals to 100. plus 50. And next, x equals to 90 degree. 30. 90. Question number 2 पे आ जाओ. मैम मुझे क्वेश्चन है. क्या डाउट है मित्रा? मैम आपने एक्सियल एंगल जो ये बोर्ड पे किया है तो मैम उसमें तीन वर्टेक्स थे तो मैम उसमें से आपने कहा कि जो ऑपोजिट साइड पे होता है उसके साथ प्लस करना होता है तो मैम इसमें 2 ऑपोजिट साइड है तो हम कोई भी कट करके उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हैं. बेटा ये कट मैंने तुमको सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तुमको कोई कट नहीं करना है. तो ऑपोजिट में सम तुम किसी का भी कर सकते हो. 30 plus 50 50 plus 30 सेम ही होगा ना, आंसर थोड़ी अलग आएगा. नहीं मैम वो आपने 100 लिखा था तो मुझे लगा कि अगर नीचे 2 वर्टेक्स हो और ऊपर एक ही हो तो मैम कोई भी हम कट करके फिर उसके साथ प्लस कर सकते हैं. कट मैंने तुमको तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए किया था, कट नहीं करना. Okay, क्वेश्चन thank you. नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x. सेम पहला देखो 115. क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है 115 इक्वल टू उसके अपोजिट एंगल कौन से है x and 50. तो x plus 50 फाइंड करो. x की वैल्यू क्या आएगी? मैम 65 degree. मैम 115 115 minus 50 कितना आया? 65. चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर दो. मैम ये नोटबुक में करना है या टेक्स्ट बुक में करेंगे तो नोटबुक में, ये चलेगा? नोटबुक में करना है. ओके. मैंने जो 6.1 का एक्सरसाइज बाकी वो आप अगले लेक्चर में करवाओगे क्या? मैम जो 6.1 का लास्ट एक्सरसाइज है वो आप अगले लेक्चर में करवाओगे? बेटा वो मैं करवा दूंगी, तुम्हें जो काम बोला वो करो ना अभी. हर्ष क्वेश्चन नंबर 2 30 100 equals to x plus 70. तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री. थर्ड अभी उसमें 125 प्लस इक्वल्स टू 125. थर्ड वाला 125 इक्वल्स टू x प्लस वो सिंबल किसका होता है? 90 90 degree. डिग्री. तो वो 90 डिग्री है. तो 35 डिग्री. 35 करेक्ट. फोर्थ 60 degree. 60 डिग्री. फिफ्थ 60 डिग्री. 50 degree. डिग्री. सिक्स्थ 40 degree. 40 डिग्री. So next